Hello friends, welcome to EduTap. So as you all know that NABARD Grade A 2022 notification is out. So this is a high time to give boost to the preparation. And guys, for that you have to have idea about the most important topics from the syllabus of your NABARD Grade A examination. Though entire syllabus is important, but guys there are few topics which are more important from the examination point of view, and there are topics which are less important from the examination point of view. Guys, though you have to cover the entire syllabus, but you have to cover the most important topics which we are going to discuss in priority, right? So first you have to cover the most important topics, and after that you have to cover the rest of the topics. So guys, mark the words, I'm not saying that you have to skip the less important topics, rather you have to cover, but you have to cover most important topics first in priority, and after that you have to cover the less important topics, right? So on this background, today we are going to discuss the most important chapters from economic and social issues wala component se, right friends? So without wasting much time, let's proceed. But friends, before starting, do subscribe to our YouTube channel and join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube sessions. So friends, if we talk about ESI static component, right? So current के लिए अलग strategy होगी. If I talk about ESI static वाला component, then if we talk about specifically phase 1, then out of 40 marks, you can easily expect between 8 to 12 marks from the ESI static components, right? So 8 से 10 मार्क्स के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ESI स्टैटिक में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फेज 1 एग्जामिनेशन में. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर 10 आउट ऑफ 40 मार्क्स, राइट? बट इफ वी टॉक अबाउट फेज 2 कंपोनेंट, सो फेज 2 ऑब्जेक्टिव प्लस फेज 2 सब्जेक्टिव, इसको अगर हम मिला दें सो इट विल बी अराउंड 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, राइट? सो आपको पता है यहाँ पर 50 मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता है इंक्लूडिंग ARD एंड ESI. सो आउट ऑफ दिस 50, दैट इज ESI वाला कंपोनेंट से, यू कैन एक्सपेक्ट 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 फ्रॉम ESI स्टैटिक वाला कंपोनेंट से, राइट? बिकॉज करंट अफेयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन, दो फेज 1 एग्जामिनेशन ऑल्सो, बट फेज 2 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट. बट आप ESI स्टैटिक का जो कंपोनेंट है उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बोनस, राइट? और बोनस अगर आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस भी आपके पास एज अ बोनस आ गए, सो गाइज बिलीव मी, यही आपका डिसाइड करते हैं, यही पर आपको एज मिल जाता है ओवर द कॉम्पिटिटर्स. आई होप यू आर गेटिंग, राइट? So this is the overall scheme I can say, where you can follow ESI static and you can score this much marks. So these are not thumb rule, these are not fixed, they can vary, ये change किए जा सकते हैं, they can fluctuate also, but this is what we have analyzed by analyzing the previous year papers, right? Now if we talk about objective component first, right? So you know that last year NABARD has introduced descriptive component in phase 2 examination. So first of all, we will be discussing about the objective component, right? So it will be relevant for both phase 1 objective as well as phase 2 objective. So what are the most important topics which you should cover in the priority? Guys, you have to mark the words, you have to focus that I am not saying that you have to skip rest of the topics. Rather, you have to cover them after covering these topics. So number first is growth and development, then poverty alleviation and employment generation, then economic history of India, then monetary and fiscal policy. Though this topic is not specifically mentioned in the syllabus of your NABARD grade examination, but guys believe me, this topic is very important. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा important topic है, and question can be asked from this topic because this is the core of economics. ठीक है, अगर हम core economics की बात करें, so these all topics are very important from that perspective. अगेन इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही फेवरेट एरिया है NABARD का. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट? Next is opening up of the Indian economy and balance of payments. This topic is again very important. And guys, then international economic institutions, right? So these topics are mentioned in the syllabus of your NABARD grade examination except monetary and fiscal policy. So if I analyze, so you can see that economics वाले component से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वाला कंपोनेंट इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी हैव एनालाइज. ठीक है, ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स भी हो सकता है जहाँ पे सोशल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द ट्रेंड्स व्हिच हैव बीन इन द NABARD grade A examination. So these all are the important topics from economics component से, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आइडिया भी लग जाएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स.
So here you can see these all are the questions asked in 2021 examination. So here you can see that which of the following countries is not a member of ASEAN, right? So these all are the options. Then which of the following shows the difference between exports and imports and services, right? So guys, this question is asked from the balance of payment. Then which of the following is an indicator of retail inflation in India? So this topic was asked from the topic, this question was asked from the topic inflation, right? So here you can see बहुत ही basic type के question frame होते हैं. So if you have clarity regarding the basic concepts of any topic, then you can easily tackle and easily answer these kind of questions asked in the examination, राइट. आई होप यू आर गेटिंग. और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट बनाई है वो हमने किस तरीके से बनाई है, बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, और जो भी ट्रेंड्स रहे नाबार्ड एग्जामिनेशन में उनको एनालाइज करके वी हैव come up with the list, right guys? So that is why these chapters are, these topics are very much important. Now if we talk about descriptive component, so again descriptive component में आपको चीज़ों को integrated way में पढ़ना है. You should cover the things in an integrated way so that you can cover both for objective as well as descriptive component. ठीक है, तो जो topics आपने objective के लिए पढ़े थे वो आपके descriptive में definitely काम आने वाले हैं. So poverty alleviation and employment generation, economic history of India, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ यू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट, राइट. देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था वो अभी हम देखेंगे. देन रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देन इफ यू टॉक अबाउट सोशल इशूज, तो सोशल इशूज entirely ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट देर आर अगेन फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम द सोशल विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एंड यू शुड कवर देम इन प्रायोरिटी. सो अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इशूज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन. सो दीज ऑल टॉपिक्स फ्रॉम द सोशल इशूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. Guys, again disclaimer, these all are the most important chapters, but you should not skip the rest of the topics. You have to cover the entire syllabus, but आपको चीज़ों को इस तरीके से पढ़ना है. एंड डिस्क्रिप्टिव को आप अलग से कंपोनेंट बिल्कुल भी कंसीडर ना करें. whenever you will prepare for objective component, you should prepare in such a way so that you can answer the descriptive component as well, right. तो उसमें आपको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव की, rather it should be integrated, right. तो आपको उसी इंटीग्रेटेड वे में जो भी नॉलेज आप ऑब्जेक्टिव के लिए गैदर करेंगे, जस्ट यू हैव टू अप्लाई इन द डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट. दैट्स ऑल, राइट फ्रेंड्स. So these all are the topics which are most important for the descriptive component. Now अगर हम बात करें, as you all know that last year NABARD has introduced descriptive component in phase 2 of the examination. So ये 3 questions जो थे वो आए थे आपके ESI static वाले component से, that is review the minimum support price. This is question number first. And how WTO agreements have dual effects on Indian economy. And question number third is farmers' dependence on non-institutional sources of finance has been on decline. So comment, right. So these topics we have already discussed. ये बहुत ही ज़्यादा important है आपके descriptive और as well as objective point of view से. So आपको ये चीज़ें इसी तरीके से cover करनी है, right. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लैरिटी है इसके रिगार्डिंग किस तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू हैव द इंटीग्रेटेड अप्रोच. ठीक है, आपको अलग अलग प्रिपेयर नहीं करना है फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट, रेदर यू शुड हैव integrated approach while preparing for both objective as well as descriptive component. And guys, यहाँ पर static का मतलब, अगर हम static descriptive की बात करें, it doesn't mean कि यहाँ पे सारी चीज़ें static ही होंगी, rather you have to apply the current knowledge अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक नॉलेज. ठीक है, तो आपको स्टैटिक और करंट नॉलेज को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है और आंसर में फ्रेम करना है, सो दैट यू कैन राइट बेस्ट आंसर, राइट गाइज. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी कौन से टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू कवर फर्स्ट इन द लिस्ट. यू हैव टू कवर प्रायोरिटी, यू हैव टू कवर देम इन प्रायोरिटी, एंड व्हाट आर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड कवर लेटर ऑन, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. विल मीट टिल देन. गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.